मैम जियोग्राफी का। Civics. Chapter 4, Women and Equality of Civics. Understanding the meaning of gender. Traditionally, gender has been used primarily to refer to the grammatical categories of masculine, feminine and neuter. ठीक है, तो जेंडर किस लिए यूज होता है? ताकि हम बता पाए कि कौन मेल है, कौन फीमेल है और कौन न्यूट्रल है, कौन दोनों है. But in the recent years, the word has become well established and is used referred to as sex-based categories, as in phrases such as gender gap and the politics of gender. This usage is supported by the practice of many anthropologists who reserve sex for reference to biological categories while using gender to refer to social or cultural categories. In more academic terms, gender refers to the socio-culture definition of male and female, how the society distinguishes them through the social roles given to them. You have seen in the society, gender is defined as male and female. Categories में divided है male और female के, और जो society अलग से प्रथा बना देती है या चीजें divide कर देती है male और female में, उसमें भी उससे डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है. For centuries, gender and sex has been confused with each other. बहुत हो गया कि जेंडर और सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है लोगों को नहीं पता है. Gender is often seen as being related to the distinct role of men and women in society. India and gender. India is an Asian society with a distinct historical, social and cultural character. Study of the earlier societies shows that there was no division in them based on caste and creed. The land was owned collectively and was jointly cultivated. पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था कि कोई डिवीजन होता था बेस्ड ऑन कास्ट और क्रीड, बट अभी बहुत ये डिवीजन चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और creed. Was jointly cultivated. These kind of societies survived until recently. In these type of societies, gender discrimination was not existent. Gender discrimination कभी नहीं होता था. Caste system is a unique feature of India which is passed down from generation to another. Caste system तो हर जगह चल रहा है, लोग भेदभाव करते हैं कि कौन से कास्ट का है कौन से कास्ट का नहीं है ना. Over the centuries, this kind of belief led to the system becoming rigid. It became more favorable to males, making a distinction between female and male members in the family. Women in Indian society. The status of women in India has been subject to many great changes over the past few millennia. ठीक है, बहुत सारा changes दिखा है women का Indian society में. From equal status with a man in ancient time to the low point of the medieval period to the promotion of the equal rights to many reformers, and the history of the women in India has been eventful. She used to fight for their rights, है ना. Women have to fight for their rights. कभी equal division नहीं होता था, कभी equal उन लोगों को respect मिलती थी, कभी नहीं मिलती. तो there was a big fight in the ancient and the medieval time. In modern India, women have held high offices in India, including that of the president, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन. बट आज के टाइम पे क्या है, वुमेन्स हर जगह पे एज अ प्रेसिडेंट है, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, लोकसभा के स्पीकर भी बन जाते हैं. सो दे आर ग्रोइंग इनफ वुमेन. As of 2011, the Speaker of Lok Sabha and the Leader of Opposition in the Lok Sabha. However, women in India continue to face atrocities such as rape, acid attack, dowry killing, etc. So there are many ill treatment with the women, like अगर डाउरी नहीं मिली है तो लोग यूज टू बर्न देम, है ना. एसिड अटैक होते हैं, कहीं रेप्स होते हैं, है ना. गर्ल्स, यू कैन हियर इन द न्यूज, स्मॉल गर्ल्स आर बीइंग रेप्ड, है ना. बहुत सारे चीजें लड़कियों के साथ होती रहती है. While on the other hand, the female form of God is an integral part of Indian culture and seen as a destroyer of evil. On the other hand, she has secondary status in society. But अगर हम देखें भगवान की तरफ में तो उन्हें बहुत पूजा जाता है. हर घर में भगवान जी को पूजा जाता है. गॉडेस जो रहती, गॉडेस लक्ष्मी, पार्वती, जो भी होगी, सबको बहुत पूजा जाता है. और दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने को डिस्ट्रॉय किया, उन इविल्स को कैसे उन्होंने मारा है. बट इधर जब इस सोसाइटी की बात आती है, यहाँ पे वो सिमिलर चीज नहीं है. The process of discrimination starts from the birth. While the birth of the son is the reason for joy, and birth of the daughter is seen as liability in certain parts of country.
कई जगह ऐसा देखा जाता है कि बर्थ ऑफ द सन इज जॉय, है ना, सन का बर्थ हुआ तो बहुत अच्छा है, बट गर्ल्स का बर्थ होता है तो उन लोग बहुत दुख मनाते कि अरे लड़की हो गई है। दे यूज्ड टू किल इफ दे नो दैट द गर्ल इज इन द womb of the mother before of the delivery, they used to kill the girl and they used to keep the boy child only. The origin of these social attitudes are the result of beliefs in inequality. ठीक है, social practices like dowry, sati, parda, child marriage were oppressive and exclusive. Women were conditioned to be subservient to the men in the family. The way the woman are treated today is modified version of the old practice. जैसे women आज treat होती है वो modified practice है कि पहले कैसे treat होती थी. Social conditioning of gender roles. How society prevails on Indian individual is often a result of how gender roles are defined. Gender role कैसे define होते हैं, इसी से society चलती है. In certain areas, a male is seen as a breadwinner and the female as a homemaker. ठीक है, ऐसा हमेशा हर जगह देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है कि जो आदमी होता है वो बाहर जाके कमाता है एंड जो महिलाएं होती हैं वो घर पे रहती है. Women used to stay at home and do the household work, but the man goes out for the breads, for the rotis, for the money. He goes out and do the job for the survival of their child or their family. This process of discrimination starts very early in life. ये discrimination की लड़कियां जॉब नहीं करेंगी, लड़के जॉब करेंगे, लड़कियां घर संभालेंगी, लड़के बस जाएंगे, ये discrimination start होता है early stages में. The boys are encouraged to play outdoors, be more independent, assertive and strong. Boys को बोला जाता है आप लोगों को independent रहना, जॉब करना, strong रहना, assertive रहना है, हमेशा अकड़ के बात करनी है, everything, है ना. Girls are told to stay at home, play with the dolls, be submissive and accommodating. गर्ल्स को समझाया जाता है कि आपको चीजें एडजस्ट करनी है, आपको डॉल्स के साथ खेलना, आपको घर संभालना है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना है. These things are not taught to the boys, only to the girls these things are taught in the society. They are encouraged to learn housekeeping skill as soon as they are able to help their family. ठीक है, फैमिली को हेल्प करो, घर कैसे संभालते हैं ये सीखो. These are taught to the girls when they are born and when they grow up to the adolescent age. The women are expected to do all the housework. सारा housework जो होता है लड़कियों का काम होता है, लड़कों का काम नहीं होता, ये समझाया जाता है सोसाइटी में. Although large number of women go out to work, they are still the primary caregivers in the family. अभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जो ladies है, women है, girls है, job करती है and they used to be in the home also, do the household work also और बाहर जाके काम भी कर रही हैं. They multitask by managing the household, caring for the children and working outside. ठीक है, ये multitask करते कि अगर बच्चे हैं तो उनका भी केयर हो रहा है, घर का खाना भी बन रहा है, बाकी काम भी हो रहा है, जॉब पे भी जा रहा है. For understanding of gender roles, education is important. ठीक है, education is very important in our life for understanding these gender roles. Who are not educated, they have the mental thought that girls can't do anything, girls shouldn't be independent. जो educated नहीं है वही इस चीज सोचते हैं. The more people are educated, the less likely they are exposed to gender bias. ठीक है, जितने ज्यादा educated रहते हैं उतना कम gender biasness होता है. More and more men are now seen doing jobs that were earlier distinctly female jobs and also helping their wives at home. Reason for gender inequality. The reason for gender inequality are social, economics, religious and political. तो रीजन जो है जेंडर इनइक्वालिटी का वो क्या है? सोशल जो होता है, जो समाज बनाता है, एक इकोनॉमिक जो घर में रहता है, रिलीजियस मतलब पहले से चला आ रहा है, और पॉलिटिकल जो चलता रहता है. These reasons help in perpetuating the problem and are responsible for the present status of men and women in society. All practices like child marriage, dowry and sati added to the problem of gender bias. जेंडर बाइस में कैसे? जेंडर बाइस मतलब भेदभाव करना. ये कैसे होता? चाइल्ड मैरिज होता था, बचपन में शादी करा दी जाती थी. डाउरी हो गया, सती सिस्टम हो गया कि पति मर गया पहले तो आपको भी मरना पड़ेगा या फिर आपको बाल कटाने पड़ेंगे. बहुत सारी ऐसी प्रथा थी जिनकी वजह से हमें जेंडर बाइसनेस देखने को मिल रहा था. Being married off to an early age did not allow the female in developing her own identity. अब बचपन में ही शादी करा दी गई, शी इज ऑफ 12 और 11 उसी में शादी करा दी गई, तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी पहचानने में ही बहुत टाइम लग जाता था. वो नहीं पहचान पाती थी वो कौन है क्या है. Being able to think of herself or being as an individual, she was totally dependent on the husband. Dowry makes women feel like commodity, a liability for the parents and a source of income for. ठीक है, ऐसे में
देखा जाता कि डाउरी जो होती है उससे क्या रहता था कि जो डाउरी चल रही है वो वुमेन फील एज अ कम्युनिटी एज अ लाइबिलिटी फॉर द देयर पेरेंट्स, ठीक है, कि दहेज दे दिया गया है, अब वो उस घर को ही संभालेंगी, उस घर का ही खर्चा चलाएंगी। द डाउरी आर आस्क्ड बिफोर द मैरिज फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल and the husband's family. This has led to the increased female infanticides, making the population squeeze. ठीक है, क्या हुआ है अब इससे कि अगर डाउरी उनके मन मुताबिक नहीं मिल रहा है, the boy side asks a big amount of money, और अगर उतना उन्हें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या होता है, they used to kill the गर्ल, है ना, जो शादी करके घर पे आई है उसको मार देते हैं या जला देते हैं, या they used to do the different domestic violence on her because she has not brought enough dowry to their homes. The old practice of पर्दा increase her sense of isolation and exclusion. अब क्या हो रहा है कि पर्दा सिस्टम होता था, जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी के हैं they used to tell the girls to wear burqa, उन लोग की आईज भी नहीं दिखनी चाहिए, इतना होता था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत आइसोलेशन फील होता था कि उन लोग एक ही जगह पे बंद है, बाहर खुल नहीं पाते थे उन लोग उतना। For centuries, the inheritance of property was restricted to the males and members of the family. The practice made women economically dependent, and women were systematically kept out of political and social participation. Years of conducting have perpetuated stereotypes which are deeply entrenched in the minds of people. A woman image has not changed. Man is still considered as breadwinner and the head of the family. Male को हमेशा consider किया जाता है कि यही बाहर जाके कमाएगा and यही हमारे घर का मालिक है। Women are often encouraged to be the homemaker. Women को हमेशा बोला जाता है कि घर में रहो, घर की देखभाल करो, काम मत करो, ये ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। In career choice too, they often are expected to take back seat instead of being an achiever. कभी अगर करियर की बात आई, पढ़ने की आगे बात आई, तो उसमें भी कहा जाता है कि इतना पढ़ के लड़की क्या करेगी, क्या जरूरत है पढ़ने का जब उन्हें घर ही संभालना है। So these mentalities make the gender biasness more powerful, है ना, इसकी वजह से gender bias बहुत होते हैं। Women are now considered to be the equal. In cities, women have taken up professional careers, and the jobs that were earlier done by men, they are also paid equally and have same position. अब क्या हो रहा है बाहर सिटीज में या आज के टाइम पे देख लो, सभी वुमेन्स एंड मेन इक्वली जॉब कर रहे हैं, वुमेन्स कमा रही हैं एंड घर का काम भी कर रही हैं, so they are managing it and they are doing the multitasking. Effects of gender inequality. The systematic differential treatment of females being very early in life has a long-term effect on society. Being deprived of not just love and affection from the family, but also better food, proper care and medical attention makes a girl physically weak. ठीक है, क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है लड़कियों का घर पे वो भी इफेक्ट डालता है ना, क्या होता है, पहले उतना लव अफेक्शन फैमिली से नहीं मिलता उन्हें, है ना, उतना अच्छे से खाने को भी नहीं मिलता जितना लड़कों को मिलता था पहले, जिसकी वजह से वो फिजिकली बहुत वीक हो जाती थी और मेंटली तो वीक रहती ही थी। अर्ली मैरिजेस एंड चाइल्ड बर्थ लीव हर बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक। अर्ली मैरिज से क्या होता है, अर्ली मैरिज हुआ, चाइल्ड बर्थ हो गया, जिसकी वजह से उनका दिमाग और फिजिकली दोनों वो बहुत वीक हो जाता था। न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड मदर गिव्स बर्थ टू माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। अब मदर ही बहुत पतली है, बहुत दुबली, माल न्यूट्रिशन है, कुछ नहीं है उनके शरीर में, अब वो बच्चे को जन्म दे रही तो वो भी माल न्यूट्रिशन ही बच्चा पैदा होगा, वो अच्छा बच्चा पैदा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नॉट सेंट टू द स्कूल बिकॉज देयर एजुकेशन इज नॉट सीन इम्पोर्टेंट। बहुत सारियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, विलेज में आज भी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, कहा जाता तुम पढ़ के क्या करोगी, है ना। This adds to their sense of helplessness. ये helplessness का एक कारण है। This treatment of females from the young age hampers them their overall development and well-being. All this also has an indirect effect on the future population of the country. A healthy mother gives birth to the healthy children. They become healthy adults, making the country a healthy and a happy place. ठीक है, अगर mother happy है तो आपका जो बच्चा होगा वो भी happy ही होगा। Steps to control gender inequality. The right to equality is a vital to the Constitution of India and is the fundamental right of every person, man and woman. The Constitution grants equality to the women while also empowering the state to adopt appropriate measures to control discrimination against women. State गवर्नमेंट में बहुत discrimination होता है जो women के regarding, उसको बचाने के लिए बहुत सारे rules लागू किए। The National Commission for Women was set up in 1990 to protect the rights and legal enlightenment of the women. 1/3 of the elected seats in local government body like panchayat have been reserved for women to increase their participation in social and political spheres in society. पंचायत में
एक जो बॉडी होगी पंचायत की, वो जो 1/3 पार्ट है वो वुमेन्स के लिए सेव कर दिया गया है। From UN Secretary General Kofi Annan has said, gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development, and building good governance. Okay, so this was the chapter. There is a lot to be done. We can take heart from the female achievers this country has produced. They have led from the front weather during the independence struggle in other fields. Sarojini Naidu, Indira Gandhi, P.T. Usha, Dr. Kiran Bedi, Kalpana Chawla, Dr. Pratibha Patil, Ram Sharmila, and the current duo iconic Saina Nehwal are all inspiration. ठीक है? So this is the story about gender biasness, women की equality कहाँ women को equal मिलता है कि नहीं मिलता है. So this was all about the chapter, the equality of the women. Okay, come to the exercise part. Choose the correct option. Gender inequality is a dash problems and needs to be corrected. Answer will be individual. Answer will be Yes. first one. Answer will be individual. Second one, the Constitution of India grants that status to women and has empowered them equal. 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 So, caste system encourage women to be kept oppressed. Answer will be oppressed. Gender inequality can be improved through education. Answer will be education. Government of India has stringent laws to abolish child marriage. Match the column. Constitution will be matched with homemakers, caregivers, and neutrals. Gender equality will be matched with was only for male members of the family. Inheritance of property will be matched with right to equality. Education will be matched with result of years of oppressive social norms. As women stereotypes are seen as helps to improve status of women. Match it everything. The Government of India reserves grass seats in local governing bodies for the women 1/3. Answer will be 1/3. Fill in the blanks का पहला वाला होगा 1/3. Cultural stereotypes cast women in the role of caregivers. Answer will be caregivers. Third one, in early city times, only dash were the inheritors of the property men. Caste system scheduled women in the society further. In India, the dash is in favor of men population. True or false? When a minor girl is married off, it is called child marriage. True. The Constitution has no reservation for representation of women. False. Caste system does not exist in India. False. Uneducated women can help build a progressive population. True. Boys can never become cook. False. Yes. फाइंड कर लेना खुद से, उसके बाद मैं देखूंगी सही है कि नहीं. ठीक है.